Bonjour tout le monde. In this video, we'll start chapter number 2 of Mo Passport 2. So the chapter is Louis a mal, means Louis has pain or he is unwell. So let's get started with the chapter. We'll discuss intro part of this chapter. So let's start from this text. It says Louis, le petit garçon est très actif, means Louis, the small boy is very active. Il aime faire du vélo, means he likes to do cycling. Louis fait du vélo, means Louis is doing cycling, means Louis is cycling. Il tombe, means he fell down. Il a mal au genou means he has pain in his knees. Le genou est un peu rouge means the knees are a little bit red. Il a mal aux jambes means he has pain in legs. Jamb का हमारा meaning क्या होता है? Legs. Over here you can see all the things, all the vocabulary words from this text. Then il a mal au bras means he has pain in his arms. Il a mal partout means he has pain everywhere. Il pleure, he is crying. La maman fait un bisou sur le joue de lui means the mother kisses the cheek of Louis. Elle raconte means she recites a story of animals. C'est une histoire du chien et de l'éléphant means it is the story of dog and of the elephant. Louis aime beaucoup les animaux. Il sourit means Louis loves the animal. He is happy or he is smiling. Le mal est parti means the pain is gone. Il dort means he fell asleep. Now let's discuss the exercise जो इस हमारे text से related है. It says dites vrai ou faux means you have to tell whether the sentence is true or false. So first sentence is Louis marche dans le parc means Louis walks in the park. So this is wrong sentence because he is doing cycling. Second we have Louis a mal aux jambes means Louis has pain in his legs. So this is wrong because already text में mention था because that he's facing pain in his whole body. So this is again faux, which means false. La maman raconte une histoire d'une petite fille means the mother recites a story of a small girl. So this is wrong because as we have already seen over here, it was a story of animals. Louis aime les animaux. So this is true that Louis like or love the animals. Then coming to the part number 2, it is compléter avec un mot du texte means you have to complete from a word from the text. It says l'enfant tombe means the child fell down. Et il and he dash. क्या करता है वो? Genu means knee, तो ये तो wrong है, no sense. Pleur means cry, so this is right. J'ai dash. Let me just rub this. Okay. So j'ai dash aux yeux. I have dash in the eyes. Mal means pain. Court means short. Raconte means recite. So the correct answer is mal. Third is mon frère aime beaucoup les dash means my brother like a lot dash. क्या उसको पसंद है? Mal, pain, jambes, legs, animaux means animals. तो पेन तो किसी को पसंद होगा नहीं, legs भी कोई सेंस नहीं बनती. So the correct answer is animaux. Then we have the fourth part. It says ne parle pas means don't speak or don't talk. Le bébé dash. The baby or you can say small child is dash. Tombe means fall down. Cour means short. Dor means sleeping. So the correct answer is dor. Then we have last question number 3. Trouver dans le texte means you have to find from the text. The partie du corps means two body parts. So यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोनों यहाँ पर 3 mentioned है, genou, jambe, bras. इसमें से कोई भी आप लोग लिख सकते हो, कोई भी दो. The nom des animaux
two names of animals. So we have chien and elephant. Okay, so this was the question. Now let's come to the les parties du corps and other topics. Les parties du corps means body parts. So let's start from the top ones. It is le bras or les bras, which means hands. Le cou is neck. L'épaule is shoulder. Le dos is our back. La poitrine is chest. Le ventre is stomach. Le doigt is finger. And les doigts are fingers. La main is hand and les mains is are hands. Le coude is elbow and les coudes are elbows. Le genou is a knee and les genoux are knees. Le pied is foot and les pieds are feet. L'orteil is a toe and les orteils are toes. La jambe is one leg and les jambes are two or more legs. Okay, so this was body parts. Now let's come to the les parties du visage, means the parts of face. We have sourcil, which means eyebrows, front, which means forehead, cils, which means eyelashes, le visage, which is face, l'oreille, which is one ear, and les oreilles, which are two ears. La dent is one single teeth, and les dents are many teeth. Le menton is chin, la bouche is mouth, le nez is nose, la joue means cheeks. Now coming to this part, oil and zew. जब एक आई की जब हम बात करते हैं तब हम उसको बोलते हैं ओइल, OEIL, एंड जब वी आर टॉकिंग अबाउट टू आइज टुगेदर, दोनों आइज को जब हम रेफर करेंगे तब हम ज्यू का यूज़ करेंगे, YEUX. Okay, then the last one is les cheveux, which means hairs. So as we have done this, now let's come to the topic du grammaire, which means grammar topics. So there are basically two topics, and जो हमारा second topic है उसके दो सब parts हैं. So it would be an easy task. So let's begin. Les adjectifs possessive, जिनको हम इंग्लिश में possessive adjective बोलते हैं, तो मेन यूज़ क्या होता है इनका? जस्ट लाइक इन एवरी डे लाइफ यू यूज सेंटेंसेज लाइक दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई बुक. सो आप लोगों ने क्या करा, यू यूज्ड द वर्ड माई टू शो पोजेशन ओवर समथिंग, जस्ट लाइक कार, बुक, एट्सेट्रा. सो वैसे ही फ्रेंच में भी द सेम टॉपिक वी हैव लेस एडजेक्टिव पोजेसिव लाइक इन इंग्लिश पोजेसिव एडजेक्टिव. बट इसमें हमारा फ्रेंच वाले जो ये टॉपिक है इसमें डिफरेंस क्या होता है, दैट हर एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास होता तो है, इंग्लिश में भी हर एक सब्जेक्ट के लिए होता है. जैसे कि आई के लिए हम माई यूज़ करते हैं, यू अगर कोई दूसरा बंदा बोल रहा है तो वो दूसरे बंदों को अगर हम बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा है तो हम योर यूज़ करते हैं. तो द सेम वे फ्रेंच में भी ऐसे ही होता है. बट देयर आर डीमार्केशन इन फेमिनिन, मैस्कुलिन एंड प्लूरल. एज यू ऑल नो, आप लोगों ने पढ़ा होगा मो पासपोर्ट की जो पिछली सीरीज़ थी कि हर एक चीज़ का जेंडर होता है फ्रेंच के अंदर. So, whenever you are putting possessive adjective, you must take care of the gender or the number it follows. Okay, so the same way we are going to discuss now. Let's start with je, जिसके साथ हमारा कौन सा possessive adjective यूज़ होता है. I'm talking about in English. So it is my. Now, अगर मेरे को फ्रेंच में बोलना है my, and if the noun is a masculine in gender, so we would use mo, MON. Then if the noun is feminine, then we use ma, MA. So genders तो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे. There is no as such trick to remember the genders. Then if a noun is beginning with a vowel AEIOU, so we'll put again mo. Okay, so mo, ma,
मो. आई एम क्रिएटिंग द कॉलम फॉर वोवल ओवर हेयर, क्योंकि यहाँ पर अलग नहीं करा गया है, सो इट बिकम समटाइम्स कन्फ्यूजिंग. सो मैस्कुलिन हो या वोवल हो, दोनों के साथ एक ही हमारा लगता है. ठीक है. देन अगर एक चीज़ हमारी है, अगर मान लो कोई ऐसा नाउन आ जाता है जो कि है फेमिनिन बट वो वोवल से शुरू होता है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है क्या पुट करें. सो कन्फ्यूजन होने की कोई नीड नहीं है. ऑलवेज प्रेफर वोवल. ठीक है. मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, वोवल अगर है तो वोवल का ही लगेगा. एंड अगर मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो बट प्लूरल है, तो ऑब्वियसली प्लूरल के केस में ही वो जाएगा. ये सेपरेट कॉलम ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं. तो द मेन इंपॉर्टेंस गोज विद प्लूरल. प्लूरल अगर है और बेशक वोवल है, बट स्टिल इट विल गो विद द प्लूरल वन ओनली. ठीक है. तो प्लूरल पहले इंपॉर्टेंस मिलेगी उसको, फिर वोवल को इंपॉर्टेंस मिलेगी, एंड देन मैस्कुलिन या फिर फेमिनिन को इंपॉर्टेंस मिलेगी. देन प्लूरल अगर है तो विल पुट मे. वैसे ही ट्यू अगर हमारा सब्जेक्ट है एंड वी से योर, समथिंग लाइक दिस इज योर बुक, सो इन द masculine or the vowel, I'll call the vowel over later. So in the masculine it would be ton, in the feminine it would be ta, and in the vowel it would be ton again, and in the plural it would be te. Then we have il or el. In English we say like his pen, her pen. So the same way in French we have son for the masculine noun, sa for the feminine noun, and again son for the vowel ones. Then we have say for the plural. Then we have nu, for which we have our, like our house, our building, our apartment. So अगर masculine है तो notre, feminine है again notre, then masculine, sorry, vowel है then again notre, and in the plural no. Then votre, 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 vo. Again I'm saying votre because I'm taking it for vowel ones. Then we have il और il जिनके साथ हम their use करते हैं, like their shoes, their handkerchief, etc. So we'll use leur with the masculine noun, leur again for the feminine noun, leur again for the vowel ones, and leur, L-E-U-R-S, for the plural ones. Okay. So this was the possessive adjective. Now let's come to the les verbes en er, means er verbs. सो मो पासपोर्ट, जो हमारी पिछली वाली सीरीज़ थी मो पासपोर्ट उसमें भी आर वर्ब्स हमने कर रखी हैं. आई अगेन गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वर्ब्स इन फ्रेंच. तो जो हमारी फ्रेंच के अंदर वर्ब्स होती हैं, दे आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज. 3 कैटेगरीज में डिवीजन होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ ई आर, सेकेंड वन इज़ आई आर, एंड द थर्ड वन इज़ आर. इन तीनों वर्ब्स को कॉन्जुगेट करने के इनके पास खुद के रूल्स होते हैं. इन दिस वीडियो विल स्टडी द ई आर वर्ब्स. अब ये ई आर वर्ब्स होती कौन सी हैं? फ्रेंच के अंदर जो भी आपके पास वर्ब होगी वो चाहे तो ई आर से एंड करती होगी, आई आर से या आर ई से. कुछ हमारी एक्सेप्शंस भी होती हैं. विल टॉक अबाउट देम इन लेटर सीरीज़, जो आगे सीरीज़ होंगी उनमें. सो लेट्स स्टार्ट. अभी हमें ई आर ही पढ़नी है. आगे वाले चैप्टर में देखेंगे ये वाली कब पढ़नी है. तो इनको तो मैं इरेज ही कर देती हूँ. let's just talk about the ER verbs. सो कोई भी वर्ब जो ER से एंड करती है, सपोज मैं यहाँ पर आपके सामने एक वर्ब लिख देती हूँ, बेशक आपको इसका मतलब ना पता हो, आप इसको देखते ही आपको पीछे से पता चल जाएगा इसके दैट इट इज़ एंडिंग विद ER. सो इट फॉल्स इन द दिस कैटेगरी ऑफ वर्ब. ठीक है, इस वाली कैटेगरी के अंदर ये फॉल करती हैं. अब ER वर्ब्स को कॉन्जुगेट करने के लिए हमारे पास खुद के रूल्स होते हैं. एज यू ऑलरेडी नो कि हमारे पास वी हैव सर्टेन सब्जेक्ट्स इन फ्रेंच. ज, ट्यू, इल और एल, नु, वो, and then il and l of plural. Now the first step that we have to do while we are conjugating the ER verbs, सपोज मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेती हूँ एक वर्ब का, पार्ले वर्ब का मैं एग्जाम्पल लेती हूँ. इसमें से सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा दैट वी हैव टू कट द ई आर को हमें कट करना है. ठीक है. एंड पुट रेस्ट ऑफ द पार्ट विद द सब्जेक्ट. अब हमारे पास रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या बचा? पार्ले को में से ई आर कट करने के बाद PARL ये बचा. ठीक है. अब इसमें से ई आर कट कर दिया. नाउ द लास्ट स्टेप is, which is the most important step, that you have to put the endings like E, ES, EE,
ONS, EZ, ENT and ENT. So this one goes with j, chu, ill, l, nu, vu, ill, l of plural ones. लेट्स सी ओवर हेयर. यहाँ पर हमारे पास जैसे कि तोम्बे वर्ब का एग्जाम्पल ले रखा है, तो तोम्बे से को ही लेकर हम चलते हैं. चलो, तोम्बे में से मैंने ER को कट कर दिया. ठीक है, अभी ये जो ES हैं जस्ट एक्सक्लूड देम. अभी ये लेकर चलते हैं. तोम्बे में से मैंने ER कट कर दिया. फर्स्ट स्टेप डन. नाउ आई विल पुट द रेस्ट ऑफ द पार्ट विद द सब्जेक्ट विच आई हैव ऑलरेडी अगेन डन. सो द लास्ट स्टेप इट्स गोना बी कि वी हैव टू पुट द एंडिंग्स E, ES, EE, ONS, EZ, ENT, ENT. So this is how you conjugate the ER verbs. यहाँ पर और भी हमारे पास एग्जाम्पल है 2 और verbs के. You can read them out. Now it is irregular ER verbs. मैंने कहा था ना लास्ट टॉपिक जो होगा इसका, जो सेकेंड टॉपिक होगा ग्रामर का, उसके 2 सब पार्ट्स हैं. तो उसके अंदर हमारे पास आती हैं इरेगुलर वर्ब्स. मतलब कि कुछ चेंजेस होते हैं ER वर्ब्स के अंदर. जो भी अभी हमने रूल देखा उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं. सबसे पहले ऐसे हमारी वर्ब्स आती है GER वर्ब्स. सपोज मैं यहाँ पर आपके सामने एक दोबारा से एक वर्ब लिख देती हूँ, मोंजे. मोंजे का हमारा मीनिंग होता है टू ईट. अब इसको देखते ही यू विल से दैट इट इज़ एन ER वर्ब, बट नो, इट इज़ अ GER वर्ब. मतलब इसके ER वर्ब्स के भी कुछ सब टाइप्स हमने अभी जाना इसको. तो GER वर्ब में ऐसा क्या होता है जो हम इसको अलग से स्टडी कर रहे हैं? बस कुछ नहीं होता. एक छोटा सा चेंज क्या होता है, जैसे कि हमने एंडिंग्स पढ़ी E, ES, EE. नू के साथ हमारी कौन सी एंडिंग आई? E, ES, EE, ONS एंडिंग हमारी आती है नू के साथ. बट GER वर्ब्स में हमारा क्या होता है कि जब हम, जैसे कि अभी एग्जांपल जो मैंने लिया मोंजे के साथ जो मेरा ER था उसको मान लो मैंने कट कर दिया. अब मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगी, ONS पुट कर दूंगी एज पर द नो एंडिंग. ठीक है, नू मोंजो. बट एक चेंज इसके अंदर हमारा क्या आता है दैट यहाँ पर ONS के साथ आगे हमें E लगाना पड़ता है इन द केस ऑफ GER वर्ब. मतलब कि अब मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, G तो मेरा है ही है एज इट इज़ एंड EONS भी लगाना पड़ेगा. सो एनी GER वर्ब जो भी आएगी ऐसे ही नू के केस में कॉन्जुगेट होगी. सो दिस वॉज द सिंपल थिंग. अब आते हैं CER वर्ब्स में. CER वर्ब्स में भी कुछ नहीं है. द एंडिंग हैज़ टू बी सेम. कोई E ऐड नहीं करना. बस जो C होगा ONS के आगे उसके नीचे हमारे पास एक एक्सेंट, इसको हम बोलते हैं, ये एक्सेंट्स ऑल्सो यू विल स्टडी. एक C के नीचे हमें एक ऐसे छोटा सा S लगा देना है. सम पीपल मेक इट लाइक दिस एंड सम मेक लाइक दिस. सो एनी हाउ यू हैव टू मेक इट. एक बार मैं लिख के दिखा देती हूँ. जैसे कि मेरा यहाँ पर आया कोमेंसो, तो ये जो C है इसके नीचे ऐसे मेरे को छोटा सा S ड्रॉ कर देना. ज़्यादा बड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा सा. ओके.